Yamuna Tira Manachar, Yamuna Tira Manachar, Yamuna Tira Manachari, Yamuna Tira Manachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Mishnipad Paramahansa Parivrajacharya Astutar Satyasi Simhad Divine Grace C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jayo Mishnipad Paramahansa Parivrajacharya Astutar Satyasi Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakti Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kund Radha Kund Giri Govardhan Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Mayapur Navadvip Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Chamuna Mai Ki Jai. Jagannath Swami Ki Jai. Nitai Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे साथ गौरदास प्रभु जी हैं। आप सभी को शायद ना पता हो, प्रभु जी श्रील प्रभुपाद के ही डिसाइपल हैं। तो हमारा ये विशेष सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं उनसे डायरेक्ट हमें आज कथा सुनने का अवसर मिलेगा। प्रभु जी का जन्म कनाडा यूएस के अंदर हुआ था और प्रभु जी सबसे पहली बार श्रील प्रभुपाद से शिकागो में 1975 में रथ यात्रा के दौरान मिले थे। उसके बाद वो सबसे पहली रथ यात्रा थी वहाँ पर, और उसके बाद प्रभु जी ने 1 वर्ष तक वहाँ पर मंदिर में सेवा प्रदान की। और 1 वर्ष के बाद 1976 में जब सबसे बड़ा मंदिर वहाँ का बन रहा था, फर्स्ट टेम्पल, तो उस समय उनका दीक्षा हुई श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा 1976 में। उसके बाद प्रभु जी 1 वर्ष
बाद प्रभुपाद जी से दोबारा पुनः 1977 में मिले मायापुर के अंदर। उसके बाद प्रभु जी ने अरोवा टेम्पल है यूएस के अंदर, वहाँ पर 7 वर्ष तक सेवा प्रदान की। और उसके उपरांत मॉन्टेरियल, जहाँ पर हमारे गुरु महाराज भी काफ़ी वर्ष थे, उस मंदिर में प्रभुपाद जी एज ए टेम्पल प्रेसिडेंट रहे 7 वर्ष वहाँ पर भी। प्रभु जी की विशेष जो सेवाएं रहती हैं, जो आपने एक तो आप पहचान ही ली होगी, कीर्तन, प्रभु जी का विशेष सेवा उनको है जो इससे भगवान को रिझाते हैं। दूसरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2 प्रभु जी की विशेष सेवाएं हैं। विशेष तौर पर अगर हम कुछ याद रखना चाहें, प्रभु जी ने जो मुझे भी थोड़े देर पहले बताया, वो है अगर आप प्रभुपाद के डिसाइपल्स को ढूंढेंगे कहीं पर भी तो ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल है। तो पिछले 12 वर्ष से ये एक तप प्रभु जी स्वयं कर रहे हैं और उन्होंने ऑलमोस्ट फेसबुक पर प्रभुपाद जी के जीवित डिसाइपल्स 950 डिसाइपल्स को एकत्रित कर लिया है ग्रुप के अंदर। तो ये बहुत बड़ी एक तपस्या है अपने आप में। तो अगर किसी को भी प्रभुपाद जी के जीवित डिसाइपल्स के बारे में जानना है तो प्रभु जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके अलावा प्रभुपाद जी की एक व्यास पूजा पुस्तक है, उसके ऊपर भी उसका प्रचार के लिए प्रभु जी काफी समय बिता रहे हैं। उसके लिए भी उन्होंने ऑलमोस्ट 17,000 भक्तों को कनेक्ट किया है और उसका प्रचार कर रहे हैं। तो पुनः मैं आभार व्यक्त करूंगा और हम प्रभु जी का स्वागत करने के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading from verse number 29. हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 30वें अध्याय का 29वां श्लोक आज पढ़ेंगे। This chapter is entitled Description of Adverse Fruitive Activities. इस अध्याय का शीर्षक है भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। And Lord Kapila Dev is speaking. और ये कपिल देव बता रहे हैं। Atraiva Naraka Swarga Iti Mata Prachakshate इति माता प्रचक्षते Yatana Vai Narakayas या यातना वय नारकस्य Ta Ihapya Upalakshitaha लक्षितः Ataiva Naraka Swarga Iti Mata Prachakshate इति माता प्रचक्षते Ya Yatana Vai Narakyas या यातना वय नारकस्य Ta Ihap Upalakshitaha. Others, please. अत्रैव नरक स्वर्ग इति मातः प्रचक्षते या यातना वै नारकस्य इह उपि अलक्षिता यतैव नरक स्वर्ग इति मतः प्रचक्षते यावात्मा वै नारकय ता इह उपलक्षिता अत्रैव नरक स्वर्ग इति मातः प्रचक्षते या यातना वै नारकस्य ता इह उपलक्षिता नरक स्वर्ग इति माता प्रचक्षते
Matajis, please. Iti mata vichakshate Jayatana Vainaka Tayahapi Upalakshita Traimanaka Sarva Iti mata vichakshate Jayatana Vainaka Tayahapi Upalakshita Traimanaka Sarva Iti mata vichakshate Atra, in this world, इस संसार में eva, एव even ही narakaha, नरकः hell, नरक swarga, heaven, स्वर्ग iti, thus, इस प्रकार mataha, O mother, हे माता prakshate, प्रचक्षते they say, लोग कहते हैं yaha, which, या जो जो yatanaha, यातनाः punishments, यातनाएं why, वै certainly, निश्चय ही narakya, नारक्य hellish, नारकीय taha, तः they, वे iha, यह here, यहाँ api, अपि also, भी upalakshitaha, उपलक्षिताः visible. दृष्टिगोचर होती है। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. की जय। Sometimes unbelievers do not accept these statements of Scripture regarding hell. They disregard such authorized descriptions. Lord Kapila therefore confirms them by saying that these hellish conditions are also visible on this planet. कपिल मुनि ने आगे कहा, हे माता, कभी कभी यह कहा जाता है कि इस लोक में हम नरक अथवा स्वर्ग का अनुभव करते हैं, क्योंकि कभी कभी इस लोक में भी नार की यातनाएं दिखाई पड़ती हैं। It is not that they are only on the planet where Yamaraj lives. On the planet of Yamaraj, the sinful man is given the chance to practice living in the hellish conditions, which he will have to endure in the next life. And then he is given a chance to take birth on another planet to continue his hellish life. So Maharaj, Prabhuji, can I read the purport in Hindi completely, or should I follow the only part? Okay, I'll finish. Okay. For example, if a man is to be punished to remain in hell and eat stool and urine, then first of all, he practices such habits on the planet of Yamaraj, and then he's given a particular type of body, that of a hog, so that he can eat stool and think that he is enjoying life. It is stated previously that in any hellish condition, the conditioned soul thinks he is happy. Otherwise, it would not be possible for him to suffer hellish life. हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य पढ़ेंगे हम। श्रील प्रभुपाद की जय। कभी कभी अविश्वासी लोग नरक संबंधी शास्त्रों के इन कथनों को नहीं मानते। वे ऐसे प्रामाणिक विवरणों की अवहेलना करते हैं। अतः भगवान कपिल उनकी पुष्टि यह कहकर करते हैं कि ये नारकीय परिस्थितियां इस लोक में भी दिखती हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल यमराज के निवास करने वाले लोक में ही हो। यमराज के लोक में पापी पुरुष को उन नारकीय परिस्थितियों में रहने का अवसर प्रदान किया जाता है जो उसे अगले जीवन में सहनी होंगी, और फिर उसे दूसरे लोक में यही नारकीय जीवन बिताने के लिए जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि मनुष्य को नरक में रहने, मल तथा मूत्र खाने का दंड दिया जाता है, तो सबसे पहले उसे यमराज के लोक में
ऐसी आदतों का अभ्यास कराया जाता है, फिर उसे वैसा ही शरीर दिया जाता है जैसे कि एक शूकर का, जिससे कि वह मल खा सके और यह सोचे कि वह जीवन का आनंद उठा रहा है। पीछे यह बताया जा चुका है कि कैसी भी नारकीय परिस्थिति में बद्ध जीव अपने को सुखी मानता है, अन्यथा यह संभव नहीं कि वह नारकीय जीवन भोग सके। Om Jnanatimarandasya Gnanjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Vanchukalpatrubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So much to thank Govinda Prabhu for asking me to give class, and I'm very grateful to be in your presence and to become purified by hearing from the Bhagavatam together with you. प्रभु जी, सबसे पहले सर्वप्रथम हर्ष गोविंद प्रभु जी का धन्यवाद आभार प्रकट कर रहे हैं कि उन्होंने उनको श्रीमद् भागवतम पर चर्चा करने के लिए अवसर प्रदान किया, और आप सबका भी धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि आप सबके संग में प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित ये तात्पर्य को पढ़ करके इस श्लोक को पढ़ेंगे। So what is hellish life in terms of how we are living today? नारकीय जीवन आज जिस तरह से हम जी रहे हैं उसकी परिभाषा क्या है? Srila Prabhupada said in one article in Back to Godhead magazine that working in a factory is equal to being in hell. श्रील प्रभुपाद ने बैक टू गॉडहेड, जो प्रभुपाद जी की मैगजीन है, उसमें एक आर्टिकल में लिखा था कि किसी भी इस जगत के अंदर फैक्ट्रियों में कार्य करना तो नर्क के समान है। I remember when I was a teenager, one of the first jobs I got was working in a welding company, and there was smoke and fire and acidic smells all day long, and I thought, wow, this must be what hell is like. प्रभु जी अपना बचपन याद कर रहे हैं अपने, जब प्रभु जी सबसे पहली नौकरी लगी थी इनकी, तो उनको वेल्डिंग की कंपनी में लगी थी। हमने देखा वेल्डिंग में क्या होता है, तो वहाँ पे सब जगह अग्नि जलती रहती है, कहीं आग निकलती है, कहीं चिंगारी निकलती है, बहुत गंदी स्मेल आती है, ऐसा लगता है तेजाब की। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि उनको लगता है कि नर्क इसी तरह का होगा शायद। So living under tyranny, living under a tyrannical government is hellish life. एक आतताई सरकार के अंतर्गत रहना भी नरक के समान है। Your rights and independence are taken away from you. आपके जितने भी अधिकार हैं, आपकी स्वतंत्रता है, वो छीन ली जाती है। And if you object, you will be put in prison or even killed. और अगर आप उसका प्रतिहार करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा या आपको मृत्यु भी प्राप्त हो सकती है। I don't know what it was like in India for the last 4 years, but in Canada and America, people were living in tyranny. If they did not agree to become an experimental lab rat and take all kinds of dangerous injections without knowing the ingredients, no jab, no job, no jab, no passport, no jab, you can't visit your family member in the hospital. This is tyranny. प्रभु जी बता रहे हैं पिछले गए 5-4 वर्षों के अनुभव के बारे में नरक से कंपेयर करते हुए, और बता रहे हैं भारत का तो उन्हें पता नहीं, लेकिन कनाडा और अमेरिका, जब आपने देखा था कोविड आया था, तो कोविड में अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, दवाई किसी को नहीं पता थी, जो इंजेक्शन बना उसका अमेरिका के पास भी कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं था, तो उन्होंने उसको फोर्सफुली लोगों को दिया। तो क्या बोला, अगर आप इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, आपको किसी अपने परिजन से जाके नहीं मिल सकते। तो प्रभु जी बता रहे हैं ये भी नारकीय जीवन जैसा ही है, आपका कोई अधिकार नहीं। War is hell because there's death all around you. और युद्ध जो होता है वो भी नरक की तरह है, क्योंकि आपके चारों तरफ मृत्यु ही मृत्यु होती है।
a loss of life, a loss of limbs, a loss of property. आप देखते हैं उसमें युद्ध के अंदर आपके जीवन चला जाता है, आपके शरीर के अंग कट जाते हैं, या आपका जो जमीन थी आपकी वो सब छिन जाती है। Invaders come, rape takes place, जो बाहर से आतताई शक्तियां आती हैं वो आपके देश में आके कब्जा कर लेते हैं, रेप होते हैं स्त्रियों के। I don't know what it's like in India, but in Canada, the prices of food are going up and up and up. अगेन प्रभु जी बोल रहे हैं भारत का उन्हें पता नहीं है, लेकिन कनाडा के अंदर खाद्य पदार्थों की जो कीमत है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच चुकी है। This can result in starvation. This is also hellish. इससे लोग खरीद नहीं पाएंगे तो उनको भूखा रहना पड़ेगा, और ये भूखा रहना भी एक तरह की नारकीय जीवन है। That's why in 1977, when Srila Prabhupada was in Bhubaneswara, he said, these cities will not last much longer. इसीलिए प्रभु जी बता रहे हैं कि 1977 में भुवनेश्वर में प्रभुपाद जी ने कहा था कि ये जो देश हैं, ये शहर जो हैं, ये बहुत समय तक नहीं रहेंगे। He said, as unemployment will continue to increase, बेरोजगारी जिस हिसाब से बढ़ रही है, people will be coming to our farms by the millions. जो People will be rushing to our farms by the millions. यस, तो प्रभु जी बता रहे हैं कि अगर ऐसा चढ़ता रहेगा तो बेरोजगारी बढ़ने से लोगों को कुछ कार्य समझ में नहीं आएगा, तो वो जो हमारे खेत हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी वैदिक एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे थे, तो उन खेतों में जाएंगे और बहुत अधिक संख्या में आएंगे। Over 50 million people were put out of work over the last 3 years. पिछले 3 साल में 50 लाख से ज्यादा लोग काम छोड़ चुके हैं, अपना काम से हटा दिया गया उनको। The writing is on the wall. The writing is on the और wall. वो दीवारों पे लगे हुए हैं उनके चित्र। So this is why Srila Prabhupada said, very important to have our own farms where we're growing our own sabjis, where we have gomatas, and the food produced on our farms will then be used to serve the deities and our Govinda's restaurant. प्रभु जी बता रहे हैं, प्रभुपाद जी ने इसीलिए बोला है कि हमारे जो वैदिक फार्म है वो बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम वहीं पर अपना अनाज, अपनी सब्जी उगा सकेंगे और उसको उगा करके भगवान को अर्पण करके हमारे गोविंदा रेस्टोरेंट में काम आ सकते हैं। And he said that our Govinda's restaurant, we have an organization in North America called Christian Science. They're a type of Christian group, the Christian Scientists. And they're famous for having a reading room. I went to visit it one time because Prabhupada said our Govinda's restaurant should have a reading room just like Christian Science. And so you can go there and you can read Prabhupada's books. प्रभु जी बता रहे हैं अमेरिका के अंदर जो क्रिश्चियन समाज है उनका एक ग्रुप होता है, एक जगह स्थान होती है जिसको क्रिश्चियन रीडिंग बोलते हैं वो लोग, और वहां पर आकर के वो उनके शास्त्र पढ़ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने एक बार चर्चा की थी, ऐसा बताया था कि जो हमारे गोविंदा रेस्टोरेंट हैं वो इसी तरह के होने चाहिए, जहाँ पर आपको भगवान का प्रसाद भी मिलेगा, लेकिन वहां पर आकर आप प्रभुपाद की विभिन्न ग्रंथों को भी पढ़ सकते हैं। I was really impressed. I had not been to Juhu Beach since about 1982. I went last week. And I was really impressed to see not just a little reading room, but a whole library, a big, just like a professional library in a big city. All of Prabhupada's books and so many acharyas. प्रभु जी बता रहे हैं वो बहुत ही प्रभावित हुए थे हमारे जुहू मंदिर में जाकर के पिछले गए सप्ताह में। वहाँ पे उन्होंने देखा कि सिर्फ एक छोटा सा रूम नहीं है पढ़ने के लिए, बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी है जिसमें प्रभुपाद जी के सभी ग्रंथ, पुराने से पुराने और नए, सब हैं उसके अंदर। So one time Srila Prabhupada was visiting London. एक बार श्रील प्रभुपाद लंदन गए, and a reporter asked him, "How do you like London?" एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपको लंदन कैसा लगा? And Prabhupada said, "London is hell." प्रभुपाद ने कहा लंदन नरक है। Because they're very proud of their London, right? क्योंकि वो लोगों को लंदन अपने आप पर गर्व था उनको, तो इसलिए उन्होंने प्रश्न किया था। But one reason I'm here is because where I live in Erin, Ontario, north of Toronto, January, February, March, and part of April is overcast skies, dark, no sunshine almost,
cloudy skies, and below zero weather. तो अगेन प्रभु जी अपने जहाँ कनाडा से आए हैं उसका जीवन बता रहे हैं और यहाँ क्यों है वो भी बता रहे हैं कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और अप्रैल आधा लगभग ये 3.5 महीने वहाँ पर जहाँ प्रभु जी रहते हैं वहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं आती 3.5 महीने अंधेरा रहता है पूरे टाइम और आपको सिर्फ कंबल के अंदर ही रहना है क्योंकि इतनी 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर रहता है हर समय तो ऐसा ये नारकी जीवन से कंपेयर कर रहे हैं प्रभु जी So that is hell. I वो told myself I'm not going through another winter like this because I didn't want to travel for the last 4 years because they wanted to force everyone to take these bizarre injections, and I refused to be a lab rat. So I waited 4 years. In my mind, I decided I'm not coming to India if I'm going to be forced to take these drugs. But somehow or other, Chaitanya Mahaprabhu arranged that no more injections, at least for this year. And I thought maybe this is my last chance to come to India until they want to inject me with more jabs. So I came, and I hope that Krishna will allow me to come back again next year. प्रभु जी बता रहे हैं कि किस तरह से जब उन्होंने इस तरह का जीवन जिया है इतने समय से तो पिछले 4 वर्ष से तो आ नहीं पा रहे थे क्योंकि इंजेक्शन लेने के लिए उनको फोर्स किया जा रहा था वहाँ पर तो वो नहीं ले रहे थे तो इसलिए वो जा भी नहीं सकते थे अपने देश से बाहर तो इस बार इंजेक्शन का इतना ज़्यादा फोर्स नहीं था तो प्रभु जी इसी वजह से यहाँ आ पाए और प्रभु जी ऐसा अपनी विनयता दिखा रहे हैं कि शायद ये उनका अंतिम समय हो या अंतिम बार हो यहाँ पर आना पता नहीं लेकिन कृष्ण की कृपा से हो सकता है दोबारा भी आते हैं You don't know how good you've got it here. Sunshine every single day, growing food all year around. You're blessed. हम लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान ने हमें भारतीयों को कितनी बड़ी उपलब्धि दी है हमें इसका कृतज्ञ होना चाहिए हमें पूरे वर्ष प्रतिदिन सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं सनशाइन मिलती है हमें सूर्य रोशनी मिलती है हम अपना अनाज उगा सकते हैं फल उगा सकते हैं सब्जियां उगा सकते हैं पूरे 12 महीने तो ये एक बहुत ही अच्छी भगवान की हमारे पे कृपा है So Lord Kapila Dev, he's speaking very strong, graphic words in these verses that we've been studying, as we heard from Krishna Chaitanya Swami the other day. तो यहाँ पर इस अध्याय और इस श्लोकों में कपिल देव अपनी माता देहवती को बता रहे हैं कि नार के जीवन कैसा होता है बहुत ही ग्राफिकल वे में ताकि आप उसको इमेजिन कर सकें कि कैसा जीवन होगा उस नार के जीवन में और कल जैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाराज ने भी हमें बताया था उसके बारे में बताया We've been reading about the description of what happens to sinful persons. हम पढ़ रहे हैं कि जो पापी व्यक्ति होते हैं उनके जीवन का ऐसा बीतता है So it's an interesting question to ask. How effective is punishing someone in terms of reforming them? आज का चर्चा का एक प्रश्न उठ सकता है कि लोगों को जीवों को सजा दे करके कैसे सुधारा जा सकता है There are different philosophies about this. Some say that the criminal should be punished. Others say the criminal should be reformed. And others say the criminal should be punished and reformed. तो इसके बारे में अलग अलग लोगों के विचार हैं सिद्धांत हैं एक विचारधारा कहती है कि जो दोषी हैं जो पापी हैं उनको सजा देनी चाहिए दूसरी विचारधारा वो कहती है कि उनको सुधारने का प्रयास करना चाहिए और तीसरी विचारधारा जो कहती है सजा भी दो और सुधारो भी So in Garga Muni Prabhu, Garga Muni joined with his brother Brahmananda Prabhu. Brahmananda has departed, but Garga Muni Prabhu is still with us. He's living in Vrindavan, and he published a book about his life called Gargamani. तो प्रभु जी बता रहे हैं दो प्रभु जी हैं जो भाई हैं गर्ग मुनि और ब्रह्मानंद ब्रदर ब्रह्मानंद Gargamuni Prabhu, गर्ग मुनि प्रभु brother of Brahmananda. ब्रह्मानंद प्रभु के ब्रदर तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो वृंदावन में रहते हैं गर्ग मनी नाम से And in his book, 2 times, he says, Srila Prabhupada's method was not to reject, but Prabhupada's method was to reform a devotee that was having a problem or a fall down. तो अपनी पुस्तक गर्ग मनी में गर्ग मुनि प्रभु ने 2 बार इस बात का उल्लेख किया है कि श्रील प्रभुपाद का जो सिद्धांत था विचारधारा थी जो तरीका था वो सजा देना नहीं था अगर कोई व्यक्ति गलत भी है तो उसमें सुधार लाना था So prison is a place for criminals
where they can be separated from the rest of society. जेल जो होता है वो दोषियों के लिए एक कारागार की तरह है जहां पर उनको बाकी समाज से काट दिया जाता है। They get a period of time in prison and then they are released. और उनको काफी समय तक जेल में रखा जाता है, कारागार में रखा जाता है और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। So many countries, they have statistics that after someone has been a criminal and put in prison, after they've been released, they continue to perform criminal activities. ऐसे बहुत ज़्यादा कई देशों के पास में इस तरह का डेटा है जो ये प्रूव करता है, सिद्धांत बताता है कि जो लोग दोषी होते हैं और उनको जेल में रखा जाता है और जब उसके बाद उन्हें छोड़ा जाता है तो उसके बाद भी वो ऐसे गलत कृत्य करते रहते हैं। There are high percentages of people who, after going to prison, continue to commit the same sins. और ऐसे जो लोग हैं जो कि जेल में जाने के बाद और वापस आते हैं उसके बाद भी गलत कृत्य करते रहते हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। The problem is there is no knowledge being given as to what is the cause of performing these sinful activities. और इसका कारण क्या है, क्यों लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं उसमें जेल में सजा होने के बाद भी? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं मिलता है कि किस वजह से वो गलत कृत्य कर रहे हैं। So if you are preachers and if you like to give this philosophy to others, you can ask them, do you know what is the cause of repeating sinful activities? After a prisoner has been released from prison, he continues to perform criminal activities. Do you know why? तो प्रभु जी बता रहे हैं, अगर आप में से काफी लोग प्रचारक हैं, आप दूसरों को कुछ समझाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति जब जेल में जाता है और जेल से बाहर आता है, उसके बाद भी वो गलत कृत्य करता रहता है, पापपूर्ण कृत्य करता रहता है, तो उसका कारण क्या है? क्या आप जानते हैं? You can repeat this shloka to them. Chapter 16, the divine and demoniac nature, verse 21. अगर जब ऐसा हो तो आप उनके सामने भगवत गीता के 16वें अध्याय का 21वां श्लोक पढ़ सकते हैं। Please repeat after me. महाराज के पीछे, प्रभु जी के पीछे पीछे दोहराइए। Trividam narakashyedam dvaram nashanam atmanaha kama krodhas tata lobhas tasmad etat trayam tyajit. There are 3 gates leading to this hell. भगवत गीता में बताया गया है 3 नरक के द्वार हैं। Lust, anger, and greed. काम, क्रोध और लोभ। Every sane man should give these up. जो भी शुद्ध जीव हैं उन सबको इन 3 चीजों का त्याग कर देना चाहिए। For they lead to the degradation of the soul. क्योंकि इनसे हमारी आत्मा का ह्रास होता है। Srila Prabhupada says in the purport that the beginning of demoniac life is being described here. प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि आसुरी प्रवृत्तियों का जीवन कैसा होता है, इस श्लोक में बताया गया। One tries to satisfy his lust. एक व्यक्ति जीव अपनी काम वासनाओं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। And when he cannot satisfy his lust, then anger and greed arise. और जब वो अपनी काम वासनाओं को पूर्ण नहीं कर पाता है तो उसके अंदर क्रोध और लोभ उत्पन्न होता है। A sane man who does not want to glide down to the species of demoniac life must try to give up these 3 enemies. एक साधु व्यक्ति को जो नहीं चाहता है कि वो 84 लाख योनियों में नीचे जाए, उसको इन 3 चीजों को त्याग देना चाहिए। These 3 enemies kill the self to such an extent that there will be no possibility of liberation from material entanglement. ये 3 चीजें जीव को इतना बुरी तरह से गिरा देती हैं, फंसा देती हैं कि आप कभी भी इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। So Narottam Das Thakur, he has written a shloka. I don't know if any of you may know it, but he says that a Vaishnava is one who engages his lust, greed, and anger in Krishna service. नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक पद की बात कर रहे हैं प्रभु जी,
और बता रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि जो ये 3 चीजें हैं जिन्हें हमें त्यागना है, जो श्लोक बताया गया है, काम, क्रोध और लोभ, इसको किस तरह त्यागा जाए? भगवान की सेवा में लगा करके। He becomes or she becomes lusty and greedy for Radha Giridhari's seva. उसकी कामनाएं और लोभ इस बात में बन जाता है कि मैं राधा गिरधारी जी की सेवा कैसे करूं। And when the devotees would go on Harinam Sankirtan in San Francisco, Jayananda Prabhu, who was a large, powerful devotee, if some gunda came to harass the Harinam party, Jayananda would take his mridanga and he'd go up to that person and he'd say, chant Hare Krishna, chant. He would express some anger, like don't disturb the devotees. तो प्रभु जी बता रहे हैं, तो काम और लोभ के बारे में बताए, यहाँ क्रोध के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे जयनंद प्रभु के बारे में बता रहे हैं, जो सैन फ्रांसिस्को में जब हरिनाम संकीर्तन होता था सड़कों पर, तो वहाँ पे बहुत लोग हमें रोकने के लिए आते थे। तो जयनंद प्रभु बहुत ही अच्छे शरीर के हैं, तो वो मृदंग बजाते थे, और जब वो ऐसे कोई आता सामने तो मृदंग को लेके उनके ऊपर जाते थे, अपना क्रोध व्यक्त करते थे कि तुम हरिनाम जपो, यहाँ पे हमें रोक क्यों रहे हो। तो इस तरह से वो बता रहे हैं क्रोध को कैसे कृष्ण की सेवा में लगाया जाता है। So it's not that devotees don't become angry, they use their anger in Krishna's service. Of course, this must be done with a cool head. Tejas Prabhu was telling me one story how he had traveled a long distance to do some seva for Prabhupada. I believe it was either in Delhi or Vrindavan, and he was trying to save Lakshmi. He was trying to save money, and he took many rickshaws, trains, and he took some time to reach Prabhupada. And when he came to Prabhupada, Prabhupada was angry. Why you've done like this? प्रभु जी बता रहे हैं कि हमें इसका अर्थ ये नहीं कि भक्त गुस्सा नहीं होते या क्रोध नहीं आता उनको, लेकिन क्रोध शांत दिमाग के साथ होना चाहिए भगवान की सेवा में। उसके लिए एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं जो उनको याद आया अभी। प्रभुपाद जी की सेवा में एक प्रभु जी थे, वो दिल्ली से शायद वृंदावन जा रहे थे। वहां पर जब वो पहुंचे तो वो लक्ष्मी को बचाना चाह रहे थे, और लक्ष्मी बचाने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग मार्गों से कि कैसे कौन सा सस्ता मार्ग है उससे जाकर के मैं वृंदावन पहुंच सकूं। लेकिन ऐसा करने में उन्हें बहुत समय लग गया। तो जब वो पहुंचे प्रभुपाद जी के पास, तो प्रभुपाद जी उनको मिलकर गुस्सा हुए, उनको बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया। And after Prabhupada chastised him, he said, oh, you must be tired. You should take prasad. और जब प्रभुपाद जी ने उन पे बहुत गुस्सा किया, क्रोध किया कि आप इतना देर से क्यों आए, और उसके अगले क्षण ही उन्होंने कहा तुम थक गए होगे, तुम पहले प्रसाद लो। तो ये कूल माइंड जो प्रभु जी ने बताया कि शांत दिमाग के साथ क्रोध कैसे करना चाहिए। So we see the anger of Srila Prabhupada is all love. Just like a Mataji might chastise her bacha, don't do like this, but that's out of love. प्रभुपाद जी का हम देखते हैं, प्रभुपाद जी का जो क्रोध है वो प्रेम के वश है। जैसे एक माता का अपने बच्चों के प्रति होता है, वो क्रोध में बोलती है लेकिन वो प्रेम है उनका। But then she doesn't stay angry all the time with her bacha. Then she feeds the bacha or takes the bacha to the park. तो माता बच्चों से पूर्ण समय नाराज नहीं रहती, क्रोध में नहीं रहती है। थोड़ी देर के लिए क्रोध आता है और उसके बाद बच्चों को खिलाती भी हैं और पार्क में भी ले जाती हैं। So we need to check our heart that if we feel angry, is it out of seva to Lord Krishna, or is it because I'm lusty and I cannot fulfill my lust, so I'm going to take it out on this devotee. प्रभु जी बहुत ही सुंदर हमें बता रहे हैं एक कंपास की तरह कैसे हम देख सकते हैं। अगर हमें क्रोध आता है तो हमें अपने आप को जांचना चाहिए, ये क्रोध क्या भगवान की सेवा की वजह से आ रहा है कि कोई सेवा ढंग से नहीं हो रही है इसलिए अंदर से मुझे क्रोध आ रहा है, या मेरे ही जो कामनाएं हैं वो पूर्ण नहीं हो रही हैं इसलिए मुझे क्रोध आ रहा है। So how to stop the lust and overcome it so that we don't become like the description in the Bhagavatam. तो प्रभु जी कह रहे हैं तो कैसे हम इन काम वासनाओं के परे जा सकते हैं, जो और क्योंकि काम वासनाओं से हमें जो हमने पढ़ा अभी उस तरह के नारकीय चीजें मिलती हैं। So when I went to meet Srila Prabhupada in Chicago, July 4th weekend, 1975, Srila Prabhupada had been reading on the airplane Time magazine, and the cover said, crime, why, and what to do. तो प्रभु जी याद कर रहे हैं कि 1975 में जुलाई 4 के जो सप्ताह था, वीकेंड था, उसको प्रभुपाद जी से मिले, और प्रभुपाद जी उस समय एक मैगजीन पढ़ रहे थे। मैगजीन का नाम था टाइम,
और उसका जो टाइटल था उस पे लिखा था अपराध, और उसके नीचे लिखा था क्यों और कैसे बचे। So the crime was increasing. वहां पर इस तरह के अपराध बढ़ रहे थे। Youth gangs, street gangs of boys were organizing themselves to fight with each other. सड़कों पर जो अलग अलग तरह के गुंडे बदमाश लोग रहते हैं वो मिलकर के अपराध कर रहे थे। Even today in some cities, it's dangerous for a child to go to school and come home. आज भी हम देखते हैं कई शहरों में एक बच्चे के लिए अपने आप से स्कूल जाना और वापस आना बहुत ही भयानक है, डरावना हो सकता है, क्योंकि इस तरह के लोग वहां पे रहते हैं। Srila Prabhupada told Lieutenant Mosey, was his name, the chief of the Chicago Police Department, we have a solution. तो श्रील प्रभुपाद ने शिकागो के पुलिस के जो हेड थे उनको बताया कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। He said we should have large scale Harinam Sankirtan and have a big and you, the city of Chicago, should give us a big arena, a big stadium where we can have big Harinam Sankirtan. प्रभुपाद जी ने कहा इसका इलाज क्या है, इसका इलाज ये है कि हम पूरे शहर के अंदर हरिनाम संकीर्तन होना चाहिए, और उसके लिए पुलिस तुम हमें सहयोग करो, हमें एक बड़ा सारा स्टेडियम दो जहां पर हम सब मिलकर हरिनाम संकीर्तन कर सकें। Srila Prabhupada said mass Sankirtan will cure the dirty things in the heart of lust and greed. प्रभुपाद जी ने कहा कि जब हम बहुत विशाल स्तर के ऊपर हरिनाम संकीर्तन करते हैं उससे हमारे हृदय के अंदर जो ये अनर्थ हैं, काम क्रोध और लोभ, ये इसका नाश होता है। What's your name, Prabhu? Aryat. What's that verse that says, by chanting the holy name of the Lord, the heart becomes clean? Prabhu, what's your name? Siddhanta. Very good. So you know the Siddhanta. So what is this verse? By chanting Hare Krishna, we clean the heart. Prabhu, you know? Cheto darpanam arjanam bhava mahadavagni nirvapanam Shera karava chandrika vitaranam vidyavadu jivanam Anandam buddhi vardhanam pratipatang purnam ritasvadanam Sarvapma snapanam param vijayate Shri Krishna Sankirtanam. That's what Srila Prabhupada was talking about. Lord Chaitanya is, Gaur Purnima is coming up, so his whole philosophy is contained in 8 verses, and that's the first one. All glories to the Sankirtan movement, which cleanses the heart of all the dust accumulated for years together. Just like if you have a dusty mirror, you can't see yourself very well. But if you clean the dust, then the reflection becomes very clear. प्रभु जी यहाँ बता रहे हैं कि गौर पूर्णिमा आ रही है और हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही हमें 8 शिक्षाएं दी गई हैं, जिसको हम शिक्षाष्टकम के नाम से जानते हैं। जो पहली शिक्षा है चेतो दर्पण मार्जनम, उसमें बताया कैसे हरिनाम जो संकीर्तन है वो हमारे हृदय के सभी मैलों को हटा देता है, साफ कर देता है इस तरह के अपराध प्रवृत्तियों को। और प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया, जैसे शीशा होता है, हम मिरर में देखते हैं अपनी शक्ल को, लेकिन अगर उसके ऊपर धूल जमी हुई है तो आपको दिखेंगे नहीं आप, तो उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कपड़े से साफ करना पड़ेगा। तो इसी तरह से हरिनाम संकीर्तन उस हमारे हृदय रूपी चित्त रूपी दर्पण को साफ करता है। So Srila Prabhupada asked the chief of police in Chicago, what is your definition of crime? तो श्रील प्रभुपाद जी ने शिकागो के जो पुलिस के हेड थे उनसे पूछा, आप अपराध की आपकी भाषा में क्या परिभाषा है? And the police chief said, trampling, stepping on the rights of others. दूसरों के अधिकारों के ऊपर खड़ा होना, उनको दबाना, ये अपराध है। And Prabhupada said, our definition is the same. प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा भी यही परिभाषा है अपराध की। And then Prabhupada quoted, you can repeat with me if you know. Ishyabashyam idang sarvam yat kincha jagatyam jagat tena tyaktena bunjata magridha kasyasviddanam. That everything is owned and controlled by the Supreme Lord, and one should accept only the quota that Lord is giving us, not being greedy or lusty for more than what is required. तो श्रील प्रभुपाद
जब पुलिस हेड की परिभाषा से एग्री करते हैं अपराध की कि दूसरों के अधिकारों का शमन करना उस पे, तो प्रभुपाद जी साथ में शास्त्र का उदाहरण देते हैं। ईशोपनिषद का ये श्लोक प्रभु जी ने बताया, उसमें प्रभुपाद जी श्लोक बोल के बताते हैं कि भगवान ने कहा है कि सब चीजों का देने वाला मैं हूँ और सबका एक कोटा बनाया गया है, तो जितना आपको दिया गया अगर आप उससे संतुष्ट रहेंगे तो आपके अंदर काम और लोभ समाप्त हो जाएगा। So Prabhupada said that prasadam must also be distributed at these places of mass sankirtan. और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जब इतने विशाल स्तर पे हम संकीर्तन करेंगे तो वहां पर प्रसादम का भी वितरण होना चाहिए। So I would just like to say something about doing kirtan, sankirtan. तो प्रभु जी अभी संकीर्तन के विषय में कुछ बताना चाहेंगे। So this is the brand new book that just came out. You can only get it in Vrindavan and Mayapur. It's written by Jayadvaita Swami. ये भी नई एकदम पुस्तक है जिसका शीर्षक है श्रील प्रभुपाद कीर्तन स्टैंडर्ड, कि कीर्तन के क्या स्तर होना चाहिए, किस तरह से कीर्तन करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा बताया गया है। ये जयद्वैत स्वामी के द्वारा लिखित है और ये सिर्फ आपको वृंदावन और मायापुर में ही प्राप्त होगी। So it's 250 pages long. इसमें 250 पेज हैं। But there's a summary in the appendix at the very back. इसके अंत में एक समरी दी गई है, संक्षेप में बताया गया इस पुस्तक के बारे में। And I'd just like to go through that very briefly. तो अभी उस संक्षेप पार्ट को प्रभु जी थोड़ा बताना चाहेंगे। So what is essential is chanting the Panchatattva mantra and the Hare Krishna mantra. सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि पंच तत्व मंत्र का उच्चारण करना और उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना। Hare Krishna mantra is the prime authorized mantra. हरे कृष्ण महामंत्र जो है वही सबसे मुख्य महामंत्र है। Other mantras that can be chanted, Govinda Jaya Jaya. जो और मंत्र बोले जा सकते हैं संकीर्तन के दौरान उसमें से एक है गोविंद जय जय। And if you look behind the Mayapur Panchatattva altar there, or maybe it's Radha Madhava's altar, but I think Panchatattva, there's a quote where Prabhupada says, in the kirtan, or maybe it says Mangalarti, you may also chant Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha Gopala Govindaram Sri Madhusudan. प्रभु जी बता रहे हैं क्योंकि स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है तो बता रहे हैं कि मायापुर मंदिर में या तो पंचतत्व या फिर राधा माधव के पीछे एक प्रभुपाद जी कोट लिखा है और उसमें बताया गया है कि जब हम सुबह आरती करते हैं उस समय मंगल आरती या फिर दूसरी आरती के दौरान हम जो प्रभु जी ने भी प्रार्थना बताई वो भी कर सकते हैं। What was implicitly approved by Prabhupada was Nitai Gaur Hari Bol, but limit on that. तो प्रभु जी के द्वारा प्रभुपाद जी ने जो स्टैंडर्ड बताया उसमें निताई गौर हरि बोल बताया है, लेकिन उसमें बताया उसको बहुत ज्यादा नहीं, सीमित मात्रा में करना चाहिए। Some devotees go Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. कुछ भक्त हैं जो सिर्फ हरि बोल हरि बोल हरि बोल ही करते रहते हैं। But we should not just say Hari Bol, we should do Hari Bol. तो हमें सिर्फ बोलना नहीं चाहिए, हमें करना भी चाहिए। So there's other mantras that Prabhupada did not approve of. Shri Krishna Murari. How does it go? Shri Krishna Govinda Hari Murari. हे नाथ नारायण Narayana वासुदेव। Vasudeva. No, Prabhupada didn't chant प्रभुपाद जी ने इस मंत्र को अप्रूव नहीं किया अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अंदर। Another mantra that Prabhupada did not allow was Gopala, Gopala, Devaki Nandana, Gopala. No. दूसरा मंत्र जो प्रभुपाद जी ने नहीं कहीं भी बताया इसके बारे में, गोपाल गोपाल देवकी नंदन। Whenever someone would see Prabhupada and they'd say, Jai Radhe, Prabhupada would say, Hare Krishna. जब प्रभुपाद जी को कोई भी मिलता था और प्रभुपाद जी को वृंदावन में जब थे तो उनको बोलता था जय राधे, तो प्रभुपाद जी उत्तर में बोलते थे हरे कृष्णा। If you go to Vrindavan, the Brijabasis, they can say Radhe, 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 Radhe. But this was not the mood of Prabhupada. Prabhupada's mood in approaching Srimati Radharani was not with such familiarity. It was more with deep respect. हम देखते हैं ब्रिजवासी बहुत आत्मीयता से राधे 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 बोलते रहते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी का मूड भिन्न था। उनका ब्रजवासियों का बहुत आत्मीयता है इसलिए बोल पाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी का श्री राधा रानी के प्रति बहुत ही आदरणीय भाव था, इसलिए वो हरे कृष्ण का उच्चारण करते थे। Some devotees also chant Hare Ramo. But who's this Ramo? कुछ भक्त हरे रामो भी बोलते हैं, तो प्रभु जी कह रहे हैं कि रामो कौन है? Some say, oh, well, that's the Bengalis. That's how they say Ramo.
कुछ कहते हैं कि बंगाली तरीका है ऐसा बोलने का रामो। But Prabhupada was a Bengali. He didn't say Hare Ramo. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि प्रभुपाद भी तो बंगाली थे लेकिन उन्होंने कभी रामो नहीं बोला। These are some mantras that Prabhupada definitely didn't like. ये कुछ चीजें हैं जो प्रभुपाद जी को बिल्कुल अपने स्टैंडर्ड में हरे कृष्ण कीर्तन में उन्होंने कभी पसंद नहीं किया। Before chanting Hare Krishna mantra, someone goes, Bolo Hare Krishna. तो श्री हरे कृष्ण कीर्तन से पहले कोई बोलते हैं बोलो हरे कृष्णा। You don't have to add anything to Hare Krishna. आपको कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कीर्तन स्टार्ट कर सकते हैं। I remember in 1976, we got the order not to chant because we used to chant Bhaja Shri Krishna. We were told no. Now Jaya Shri Krishna Chaitanya, because devotees were going Bhaja Hare Krishna, Bhaja this, Bhaja that, and so Prabhupada changed it. प्रभु जी बता रहे हैं 1976 में जब कीर्तन चलते थे उस समय प्रभुपाद जी सेम स्टैंडर्ड रखने के लिए अलग अलग नियम पास करते थे, बताते थे। तो कोई बोलता था भज जय श्री कृष्ण चैतन्य ऐसे बोलते थे, तो बोलते थे भज नहीं लगाना कुछ भी, आप डायरेक्ट मंत्र से स्टार्ट करो। So also no Oh Hare Krishna, Ah Hare Krishna, not तो necessary. ये जितने भी अलग अलग तरीके हैं जो लोग भिन्नताएं प्रस्तुत करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी का स्टैंडर्ड था एक तरीका रखना। Prabhupada said no cinema songs in the temple. प्रभुपाद जी बोलते थे कि सिनेमा में पिक्चरों में जो गाने होते हैं उनको बिल्कुल गाना नहीं है मंदिर में। Now I talked to Ayendra Prabhu. I used to be on the 24-hour kirtan in Vrindavan for some weeks, and I said, because he has so many beautiful melodies, right? Vrindavan mellows and Braja Vilas. I said, where do you get all of your tunes? Where do you get all your melodies from? तो प्रभु जी याद कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कीर्तन के लिए बहुत जाने प्रचलित हमारे जो गुरु हैं ऐन्द्र प्रभु, तो उनका संग प्रभु जी को बहुत समय मिला वृंदावन में। तो एक बार हम जानते हैं ऐन्द्र प्रभु के पास बहुत अलग अलग धुन थी हरे कृष्ण महामंत्र की, वृंदावन मेलो एक उनमें से बहुत प्रचलित है। तो प्रभु जी ने एक बार उनसे पूछा कि आपको ये अलग अलग धुन कहाँ से प्राप्त होती हैं? Where do you get all your melodies from? And with a little twinkle in his eye, he said, everywhere. और ऐन्द्र प्रभु ने, उनकी आंखों में चमक थी और उन्होंने बोला सब जगह से। So maybe some of his Hare Krishna tunes came from his cinema song, but it was not a cinema song he was singing. He was singing Hare Krishna. प्रभु जी बता रहे हैं कि हो सकता है कि जो उनकी धुन हो उनमें से कोई पिक्चरों के गानों की धुन से मिलके आया हो, बन के आया हो, लेकिन वो मंदिर में पिक्चर गाना नहीं गा रहे थे, मंदिर में वो भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे थे। In one letter, Srila Prabhupada said, you can sing the Hare Krishna mantra in the tune of your own country. प्रभुपाद जी ने एक पत्र में अपने शिष्यों को बताया कि अगर आप चाहते हैं तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अपने देश में जो अलग अलग प्रचलित धुन है उनके ऊपर भी हरे कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं। So one god brother, he passed away. He was a very loved kirtan leader in Canada, Vancouver. His name was Das Prabhu. And he used to sing a Mexican tune. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So that would be very popular in Mexico because everyone knows this song. But he was Krishnizing it. प्रभु जी बता रहे हैं कि एक मॉन्ट्रियल के अंदर एक प्रभु जी के गॉड ब्रदर थे, उनके गुरु भाई थे। उन्होंने एक प्रचलित जो मैक्सिको का गाना था उस पे उन्होंने जैसे अभी धुन में गाया, तो उस तरह से उन्होंने गाया उसको और वो बहुत प्रचलित हुआ क्योंकि वहाँ की लोकल धुन थी वो। We should not invent mantras. हमें मंत्र को सही रखना है, उसमें कुछ अलग अलग जोड़ना नहीं है मंत्र के अंदर। One god brother was chanting Gaura 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 Hey, and Prabhupada said, no, don't concoct, don't. जैसे उदाहरण के लिए प्रभु जी ने बताया अभी, इस तरह के भी कुछ अपने आप से हम गाते गाते कुछ निर्मित ना करें अलग से। I just came from Jagannath Puri before I went to Mayapur, before I came here. And in Jagannath Puri, I went to visit the Samadhi of Srila Haridas Thakur, and I also went to the Siddha Bakula of Haridas Thakur. And so they were chanting, I mean, imagine, Srila Haridas Thakur is our Namacharya. And what are they chanting? Nittai Gaur Radhesham Hare Krishna Hare Ram. Chaitanya Mahaprabhu did not come to give that mantra.
प्रभु जी बता रहे हैं एक और उदाहरण के रूप में कि अभी प्रभु जी जगन्नाथपुरी से आए हैं अभी कुछ समय पहले। जगन्नाथपुरी में वो वहां गए जहाँ पर नामाचार्य हरिदास ठाकुर की समाधि है और सिद्ध बकुल जहाँ पे उन्होंने इतने समय तक हरिनाम जप किया। And then तो I went to Eka Chakra. और उसके बाद एक चक्र भी गए I went to Eka Chakra for the first time on Lord Nityananda's appearance day. और लॉर्ड नित्यानंद जी के प्रकट प्राकट्य दिवस पे वो एक चक्र भी गए Where he appeared. जहाँ पर नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए थे। And they were chanting Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna Hare Rama Jai Shri Radhe Govinda. तो ये सब अलग अलग मंत्र तो प्रभु जी ये देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं कि प्रभुपाद जी का जो स्टैंडर्ड है वो कैसे भिन्न होता जा रहा है, बदलता जा रहा है जगह जगह। So these are all holy names of the Lord, but this is not what Chaitanya Mahaprabhu came to give. हम कह सकते हैं कि सारे भगवान के पवित्र नाम हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन प्रभु जी यहाँ बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने आकर के स्वयं ये सब नहीं कहा है, ये सब नहीं बोले। So that's why Jayadvaita Swami published this book. He didn't get it authorized by the GBC, so it's not like everything he's saying in here is necessarily law, but I'd say 99% of it is, because he has bibliography, he has quotes backing up every single statement he's making here. प्रभु जी बता रहे हैं तो ये जो पुस्तक है जयदेव स्वामी के द्वारा, ये इस पुस्तक के अंदर उन्होंने सारे स्टैंडर्ड स्तर बताए हैं। हालांकि ये पुस्तक जीबीसी के द्वारा अभी तक ऑथराइज नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी इसमें लिखा है प्रभु जी अपने अनुभव से बता रहे हैं, इसमें 99% सब चीजें जैसी प्रभुपाद जी ने बोली वैसी हैं। और इम्पोर्टेंट क्या है, जो प्रभुपाद जी का तरीका था, उन्होंने जो कुछ उसमें लिखा है उसके पीछे एक प्रभुपाद जी ने कहाँ पर ऐसा बोला है वो उसके लिए उसका रीजन दिया है, प्रूफ दिया है। I don't want to create controversy, so I will not bring up the point that some people are concerned about. There's one point in this book, but if you want to know that, you have to ask me outside the class, and I can explain that. तो प्रभु जी बता रहे हैं, प्रभु जी कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पर। इसमें एक विषय दिया गया है जो थोड़ा सा इस तरह का है, तो प्रभु जी उसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो प्रभु जी से अलग से बात कर सकते हैं उसके विषय। So I have about another 15 points, but I think I've taken enough time. It's already 10 after 9, so maybe I should. So प्रभु जी बता रहे हैं उनके पास अभी 15 पॉइंट्स और थे जिन पे वो चर्चा करना चाहते थे, लेकिन शायद समय हो चुका है हमारा आज की कक्षा का। Does anyone have a comment they'd like to make or a question, please? प्रभु जी से आपका कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ आप अपना अनुभव बताना चाहते हैं आज की कक्षा के विषय में? If Prabhupada said asking a question is a sign of intelligence. प्रभुपाद जी ने ऐसा बताया है कि प्रश्न पूछना, जिज्ञासा करना, ये एक बुद्धिमत्ता का चीज है। I know you're all very intelligent devotees. और प्रभु जी जानते हैं आप सभी बहुत ही बुद्धिमान हैं, तो प्रश्न कीजिए। Did I manage to turn on a little light for anyone? Is there a reflection, some point you like or didn't like? किसी को कोई चीज अच्छी लगी हो जो प्रभु जी ने बताई आज, या कुछ ना अच्छी लगी हो, आप कुछ भी किसी भी विषय पे कुछ रिफ्लेक्शन डालना चाहते, कुछ बताना चाहते हैं, तो प्रभु जी सुनना चाहेंगे। Yes, Prabhu. Give him mic. हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास दिया। मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ, प्रभु जी इंग्लिश करेंगे। तो दो प्रश्न हैं प्रभु जी। एक तो भक्त लोग, कई भक्त ऐसा कहते कि प्रभुपाद जी ने कहा है हरे कृष्ण महामंत्र से कई गुना पावरफुल पंचतत्व मंत्र है, लेकिन ऐसा कहीं पढ़ने में नहीं आया है। तो इस बारे में प्रभु जी कुछ। So Prabhuji, first he's saying thank you for the wonderful class, and then he said he has a query. He has two queries. First one he asked is a lot of people say that Hare Krishna Mahamantra, the more powerful mantra than Hare Krishna Mahamantra is Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Is that so? What's your point about it? What I would say about that is, by chanting the Panchatattva mantra, it helps to clear. Because there's the offensive stage of chanting, then there's the clearing stage of chanting where we're overcoming our anarthas, and then there's the stage of
Krishna Prem chanting. So in that sense, Panchatattva mantra is very powerful because it helps us to achieve Krishna Prem level of chanting. But Chaitanya Mahaprabhu did not show the example that we should chant more Panchatattva mantra than Hare Krishna mantra. He gave stress to the Hare Krishna. But Panchatattva mantra should always be chanted before. तो प्रभु जी आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए बता रहे हैं कि हाँ, हालांकि हम जानते हैं कि जय श्री कृष्ण चैतन्य जो पंचतत्व मंत्र है वो हमारी जो अनर्थ निवृत्ति है उसमें हमें मदद करता है, क्योंकि एक हम जब जब करते हैं या हरि नाम लेते हैं एक अपराध स्तर पे करते हैं और एक उससे ऊपर होता है अनर्थ निवृत्ति के बाद और फिर प्रेम भाव। तो अनर्थ वाली स्थिति से हमें ऊपर लेकर आता है पंचतत्व मंत्र, लेकिन उस और तो इसलिए उसमें शक्ति है, लेकिन उसमें इतनी शक्ति हम नहीं कह सकते कि हरे कृष्ण महामंत्र से ज्यादा, क्योंकि हम अगेन चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देखते हैं, उन्होंने हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का ही किया है। तो हमें अवश्य हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण से पहले पंचतत्व मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये उससे ज्यादा पावरफुल है, जैसा आपका प्रश्न था। And so also because Panchatattva mantra is so powerful and essential, still we should only chant it maybe 3-4 times in the kirtan because we want to get to Hare Krishna. One time I watched one good friend of mine, he was chanting kirtan Sunday feast, and I watched with my watch how much Hare Krishna he's going to chant in a half an hour. And it was 10 minutes. But Hare Krishna is supposed to be, because he was also chanting Jaya, Jaya Gaurnita, Jaya Jagannath, Jaya Baldev, Jaya Subhadra, Jaya Radha Krishna, Jaya, 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 Jaya everything. But Hare Krishna mantra is the most important. प्रभु जी एक और अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि हम पंचतत्व मंत्र को कीर्तन में बोल सकते हैं 1 2 3 बार, इस ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, हमें ज्यादा फोकस करना है हरे कृष्ण महामंत्र पे। उदाहरण के तौर पे उन्हें अब याद कर रहे हैं कि अपने एक जो साथ में और भक्त थे वो एक बार कीर्तन कर रहे थे, तो कीर्तन से करते समय उन्होंने देखा कि आधे घंटा उन्होंने कीर्तन किया और उस आधे घंटे कीर्तन में सिर्फ उन्होंने 10 मिनट ही हरे कृष्ण महामंत्र बोला, बाकी समय वो और चीजों में जय जय करके बता रहे थे। तो प्रभु जी का कहना है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र पे ही फोकस करना है, बाकी आप बोलिए लेकिन मेन हरे कृष्ण महामंत्र होना चाहिए। हरे कृष्ण। और प्रभु, हाँ ओके। और इसमें महाराज जी ने जयद्वैत महाराज जी ने कुछ संकीर्तन और नगर संकीर्तन में क्या अंतर है ऐसा कुछ लिखा है तो प्रकाश डालिए। So Prabhuji, next question he's asking is, in this book, did Jayadvait Maharaj has said something difference between Sankirtan and Nagar Sankirtan? Can you throw some light on that? Difference between Sankirtan and Nagar Sankirtan. Did he said something? My understanding, Nagar Sankirtan is going through the village. Streets, yes. Village or streets. In the streets. Yes. Take it to the streets. Yes. We should be taking Harinam Sankirtan to the streets. Like sometimes I get invited to home programs, just like I am today. And I'm very grateful. But I don't want to just sit in the house doing Harinam. I want to go into the street and bring it to all the people who need it. So Nagar Sankirtan, one thought that comes to my mind is Bhaktivinoda Thakur actually had different songs that can be sung in the streets. I forget which ones. I would say there's really no difference because it's the Hare Krishna mantra that we want to give to everybody. But depending time, place, circumstance, maybe if you're in Mayapur and you're in the villages, you can sing some different songs of Bhaktivinoda because they already are knowing. But no, as far as I understand, no difference. प्रभु जी के द्वारा प्रभु जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनको नगर संकीर्तन और नॉर्मल संकीर्तन में कोई भेद नहीं दिखता ऐसा। हालांकि वो बता रहे हैं कि अगर आप मायापुर में हैं और वहाँ पर आप नगर संकीर्तन पे निकले हैं तो क्योंकि वहाँ के लोग बंगाली हैं और उससे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं और भक्ति विनोद ठाकुर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, तो भक्ति विनोद ठाकुर के कुछ भजन गा सकते हैं वहाँ पर, लेकिन अगेन उनका जो आपका प्रश्न था उससे रिलेटेड है कि वो सेम है, उनमें देयर इज नो डिफरेंस, में कोई अंतर नहीं है दोनों में। Sadhu Sangha, Sarva Shastri Koi, Lava Matra, Sadhu Sange, Sarva Siddhi Hoy. So thank you very much for your
Sadhu Sangha. Bhaktisiddhanta said when he's sitting on the Vyasasan, he feels like he's an animal in the zoo and everyone's coming to see the animal. So I'm just a mudha, but by Srila Prabhupada's grace, somehow or other, he's arranged for me to come here after almost 50 years of meeting him. And I'm very grateful to all of you. Prabhupada would be very pleased by your participation here in Radha Giridhari's Lalita Vishaka Mandir. And take invitation cards with you. Wherever you go, always carry some invitations. Because Yari Deka Tare Kaha Krishna Upadesh Amara Agyaya Guru Hona Tara Edesh. I ask you to please pray that I may return again to have your association in the future. Thank you very much. हरे कृष्णा। तो प्रभु जी यहाँ बता रहे हैं हम सबके ऊपर से कृतज्ञता दिखा रहे हैं, और जैसे उन्होंने बताया साधु संग सर्वशास्त्र के, तो उनको वो ऐसा बता रहे हैं कि उनको बहुत ही अच्छा लगा और ऐसा कृतज्ञता दिखा रहे हैं कि हमें हमारा संग प्राप्त कर पाए, हम साधु हैं उनके समक्ष और वो हमारा संग प्राप्त कर पाए, जैसे उनकी शुद्धि हुई है, उनकी विनम्रता है अगेन। और साथ में बता रहे हैं कि हमें राधा गिरधारी जी की बहुत सेवा करनी चाहिए, नगर संकीर्तन करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रभु जी ने बताया अभी अंत में वो था कि हमें अपनी जेब के अंदर कुछ कार्ड्स रखने चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र के, मंदिर के एड्रेस के कुछ कार्ड रखने चाहिए। जब आप कहीं भी जाते हैं तो लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने अंत में बताया कि जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ताकि आप कृष्ण का उपदेश कर सकें। इसी के साथ प्रभु जी ने अपना आज का जो भागवतम के ऊपर चर्चा थी उस पर विराम दिया है। तो हम भी प्रभु जी को आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने इतनी सुंदर कक्षा ली। और जैसा मैंने पहले कहा था, श्रील प्रभुपाद के डायरेक्ट शिष्यों का हमें संग कम ही मिलता है, पूरी दुनिया में बहुत कम है। हमें ऐसा संग प्राप्त हो पाया तो ये हमारा सौभाग्य है। और उन्होंने हमें इतने अच्छे से कीर्तन के बारे में और क्लैरिटी दी, क्योंकि हम सब अलग अलग सिद्धांतों को मानते रहते हैं। तो उन्होंने हमें पुस्तक के माध्यम से बताया कीर्तन के अलग अलग क्या स्तर हैं, क्या हमें फॉलो करना है, कैसे करना है। तो हम उनका आभार व्यक्त करते हुए, और उन्होंने अंत में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रार्थना की हम सबसे कि ऐसा प्रार्थना कीजिए राधा गिरधारी जी से कि वे पुनः भारत इंडिया आ सके, ताकि वो आकर के हमारा संग प्राप्त कर सके और यहाँ पर आकर सके। तो आइए श्री राधा गिरधारी जी से ऐसा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आप आए और हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Prabhu ji, we all have prayed to Radha Girdhari ji for you so that you come again and